year 2002 as the first place student in Patna with well-researched concept-based teaching patterns. Over the years, with the constant and overwhelming love and support that we have received from the parents, guardians, and well-wishers, we have been able to grow in leaps and bounds. And today, down the line, our school continues to offer the best. This year, our annual day promises to be a celebration like no other, packed with spectacular performances, thrilling displays, and unforgettable moments. I encourage everyone to show their full support and applause to the participants who have put in endless hours of practice to make this event a grand success. Let us make the effort count with our cheers and encouragement. So now, without further ado, let us commence our thundering 22nd annual function. As is customary, we begin this grand event by evoking the blessings of divine, seeking wisdom, light, and success in all our endeavors. The lightning of the lamp symbolizes the triumph of light over darkness, knowledge over ignorance, and good over evil. It is an age-old tradition that reminds us of the importance of knowledge, enlightenment, and unity. I now request our directors, Mrs. Dipti Singh and Mrs. Anuradha Singh, Principal Mrs. Rekha Agarwal, and the guest of honor, Mrs. Madhu Modi, to come and make an auspicious start by lighting the lamp. Tonight, we come together to honor and celebrate the vibrant culture, heritage, and diversity that make our country truly incredible India. I'm sure you all are eager to hear from our little ones, so put your hands together for the first program of the evening by our little Shamrockites, who are delighted to greet you with their welcome song. The songbirds gracing with the melodious voice are Anirav Agarwal, Arohi Rathor, Arnav Kumar, Aditya Roy, Advik Raj, Isha Mohan, Narayan Sinha, Viransh Singh, and Riyansh Agarwal. A big round of applause from all sides, dear parents. Let's encourage them by our clapping. From all sides. Upstairs as well and backside as well. A big round of applause from all sides. And shine like the sun.
continuously, dear parents. Let's encourage them by our clapping. Beautiful. All sides, dear parents. Lovely. And the message is, thank you, Shukriya, Dhanyawad. Loud applause. Oh my God. This year's theme, Incredible India, is an ode to the rich culture, heritage, and diversity that makes our country one of the most fascinating places on earth. And tonight, we'll take you on a journey to explore this beautiful through performances, dance, music, and more. The diversity in our language, costumes, festivals, food, and dances reflect the spirit of unity in diversity that India is known for. To start off this celebration, we have an incredible cultural performance that represents one of the many beautiful states of India. Get ready to witness a traditional dance from Kashmir, known for its unique music and colorful attire. Let's immerse ourselves in the beauty of India's rich heritage. The land of Kashmir is filled with beauty and art that can be seen in its traditional music, handicrafts, and most beautifully in its dance forms. Through dance, the people of Kashmir express their deep connection to the land, nature, and the spiritual traditions that have been passed down through generations. Kashmiri dances, with their graceful movements and energetic rhythms, have an inherent elegance deeply connected to the natural surroundings of the valley. The rhythm and music blend with the essence of land, where every beat and every step is a tribute to the beauty of Kashmir. Let Spirit of Kashmir transport you to the serene valley and lush landscapes of this beautiful region. Let's celebrate the magic of Kashmiri dance. The participants are Advika Shandyal, Prakhya Sharma, Anya Dubey, Krishna, Bhavya Ishi, Ansh Ranjan, Kian Jeet, Anshuman, Atharv Shaurya, and Vedant Shaurya.
का रंग है सच्चा बाकी सारे झूठे, हाथों से अब मेहंदी का ये रंग कभी ना छूटे। बुम्बरो बुम्बरो शाम रंग बुम्बरो 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 शाम रंग बुम्बरो आए हो किस बगिया से ओ तुम। As we continue our journey through incredible India, we are about to witness another brilliant performance. India is known for its unity, and no festival or celebration is complete without music and dance. The vibrant state of Punjab, a land known for its rich history, festivals, music, and of course, its dynamic dance forms. Punjab, the land of 5 rivers, is home to some of the most high-spirited and joyous dance forms that truly reflect the spirit of its people. Whether it's the rhythmic beats, the energetic movements, or the colorful costumes, Punjabi dance is all about celebration and unity. One of the most popular and widely recognized dance forms from Punjab is Bhangra. Originating from the agricultural communities of Punjab, Bhangra is a high-energy dance that celebrates the harvest, the joy of life, and the spirit of togetherness. Today, we are excited to present a spectacular Bhangra performance that will make you tap your feet, clap your hands, and join in the infectious spirit of Punjab. So get ready for an electrifying experience. Let the rhythm, energy, and joy of Punjabi dance take over, and let's celebrate the incredible culture of Punjab together. Please welcome our talented performers with a big round of applause. And the participants are Arav Sharma, Nihit Raj, Vanya Agarwal, Divisha Arya, Tanisha Shahi, Akshita Gupta, Adya Dubey, Advik, Vidit Mishra, and Vihan Vaibhav. हो रंग बुरे दी रंग रंगीली लड़की छैल छबीली उसदे चंचल नैन कटा और चंचल नैन कटार ते उसदा रूप बना हथियार उसके रूप से कत्ल हुए तो चर्चा शुरू हुआ नगाड़ा 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 बजा नगाड़ा 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 बजा ओ रंग बुरे दी रंग रंगीली छैल छबीली नार चंचल नैन कटार ते उसदा रूप तेज तलवार उसके रूप से कत्ल हुए तो
India. People take a holy dip in me, what am I? 29 siblings, but we are all unique. We are together called one nation, who am I? And their heritage. Each dance form has its unique story, rooted deeply in the traditions of Rajasthan. And through these dances, we experience the state's proud history, culture, and the very spirit of its people. So get ready to be enchanted as we take you through the incredible visual journey. The stage is set, the music is ready, and the dancers are all set to mesmerize you with their energy and grace. And the participants are Priyansh Raman, Ridhima, Viransh Singh, Isha Mohan, Advik Raj, Arohi Rathod, Anirudh Agarwal, Narayan Singh. केसरिया बालम आओ नी पधारो नी मारे known for its warmth, vibrancy, and spirited folk traditions. And what better way to explore Gujarat's culture than through its iconic dance form. Gujarat is a home to some of India's most energetic and joyous dance forms. Whether it's a good tap rhythms, swirling colors, or the storytelling through movement, every dance performance from this stage is filled with energy and excitement. One of the most popular and internationally recognized dances of Gujarat is Garba.
This lively folk dance is performed in circles, with performers clapping, swirling, and moving to the beat of traditional music, celebrating the spirit of togetherness and devotion. Garba is often performed during festivals like Navratri, but its charm is eternal. It's not just a dance, it's a celebration of life, of community and of joy. The energetic step and the colorful attire make it a sight to behold. Along with Garba, another mesmerizing dance form from Gujarat is Dandiya dance. Often performed with colorful sticks called dandiyas. The rhythm and the coordination between dancers create a beautiful harmony that fills the air with excitement. Through these dances, Gujarat speaks of its vibrant traditions, its rich history, and the exuberance of its people. Today, we'll witness the beautiful fusion of tradition, rhythm, and culture in the performance to follow. So get ready to tap your feet to the beats and be a part of the festive spirit as we begin with the electrifying Garba dance performance. Watch as the dancers bring to life the heart and soul of Gujarat through every step, every twirl, and every clap. Let the energy flow, let the rhythm take over. And the participants are Anupam Singh, Jayashri Priya, Anya Anand, Vedant Patil, Saisha Kesri, Aditya Roy, Leanne Agarwal, and Arnav Kumar. અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे होई गई रात અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा गाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात गाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात रे गाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात रे छुप के तुम्हें देखा मैं करूं सारी सारी रात सारी सारी रात छुप छुप के मुझे देखा तू कर सारी सारी रात मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जो गाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात जो गाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात रे जो गाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग वेद जुए तारी बात रे Going further, I would like to request Viram Singh's mother to kindly come on the stage and share her experience in the school.
With utmost humility, I extend herewith heartfelt gratitude and appreciation all the creative and hardworking fraternity of Shamrock Devils for putting up such an enthralling program for all of us and making us feel so special and proud. To see our little ones perform on this platform is no less than a treasure delight. Our children, who are the center of our hearts, add more meaning to our lives. Thank you for giving us these precious movements when we as parents realize we have everything we ever wished for. On behalf of all the parents, I truly feel elated and humbled to share my gratitude towards our working teachers for pouring out their utmost love, care, affection to our children. You all are truly role models for our children. As our children are about to bid adieu to their foundation school, Shamrock Petals, I pray to the Almighty for blessing this great institution to be always that it may reach to its pinnacle of success. Thank you one and all. Thank you so much. Thank you, Shamrock Petals. Thank you so much, ma'am. I would also request Saisha's parents to kindly come and share their experience. I am Sakit Keshri, father of Saisha Keshri and his wife Nisha Keshri. So, there's a very old saying, in fact, I would say there's a very golden saying, children of today will make India of tomorrow. यहाँ अच्छे बेटे केवल बच्चे नहीं देखते बल्कि मुझे दिखता है भारत का एक सुनहरा इतिहास, भारत का एक चमचमाता इतिहास। तो यहाँ बच्चे बैठे हैं आज, मतलब डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे, टीचर बनेंगे या फिर बिजनेसमैन बनेंगे, जिससे न केवल हमारे देश का नाम रोशन होगा, जिससे न केवल हमारे देश का नाम रोशन होगा बल्कि हमारे शहर पटना, हमारे स्टेट बिहार और हमारे शहर का भी नाम रोशन होगा। देखिए आज का दिन हम सभी के लिए बहुत खास है। मेरी बेटी साइशा और यहाँ के सभी बच्चों के लिए शेमरॉक पेटेल्स न केवल एक स्कूल है, बट इट इज मोर लाइक अ सेकंड होम फॉर देम, जहाँ इन्होंने न केवल ज्ञान बल्कि अच्छे संस्कार, आत्मविश्वास एंड अच्छे मित्र पाए हैं। मैं अपने पूरे दिल से यहाँ के सभी शिक्षकों का एंड स्कूल मैनेजमेंट का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतने प्यार से, लगन से और मेहनत से इन्हें पढ़ाया है और इन्हें एक सही मार्गदर्शन दिया है। ये सफर इतना शानदार नहीं होता आपके सहयोग और सपोर्ट के बिना। एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर परफॉर्मिंग टुडे, यू आर द स्टार ऑफ द इवेंट। सो कीप शाइनिंग, कीप मेकिंग मेमोरीज एंड ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। थैंक यू सो मच माय Activity journey to the southern part of our incredible country, where the dance forms are as timeless and graceful as the culture they represent. South India, with its rich tradition and heritage, is home to some of the most classical and diverse dance forms. These dances are not just performances, but are an expression of devotion, storyline, and artistry. Each dance forms, through unique in its style, share a deep connection to the spiritual and cultural heritage of South India. The rich history and the vibrant costumes and the sheer skill involved make them not just art forms but celebration of life itself. Now enjoy the beauty of the storytelling and the magic that comes to life through every movement. Let's celebrate the incredible culture of South India together. And the participants are Arav Sharma, Nihit Raj, Vanya Agarwal, Divisha Arya, Tanisha Shahi, Akshita Gupta, Adya Dubey, Advait, Badit Mishra, and Rihan Vaibhav. அப்படி போடு 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 அஸ்தி போடு கண்ணாலே இப்படி போடு 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 இட்டு போடு கையாலே உன்னோட ஊருக்கு உப்பு மூட்டை எரிக்கிற உன்னோட கண்ண பொதி கண்ணா மூட்டி ஆடவர இந்த நட
நீ மணக்கிறியே இது அதுதானா உன்னோட கண்ணங்கடை கக்கா கடி நான் கடிக்க என்னோட காது பக்கம் செல்ல கடி நீ கடிக்க இந்த வயசு போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த வயசு போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா இந்த வயசு போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா கபடி போடு 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 அகத்தி போடு கண்ணால எப்படி போடு 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 இழுத்து போடு கையால आज मेरे पास कोई स्किल्स तो नहीं है बट आई हैव माय फीलिंग्स और मुझे लगता है कि जो मेरी फीलिंग है ये हम सारे पेरेंट्स की फीलिंग है क्योंकि अनाथ हमारी जब पहली चाहिए जब हमारे जिंदगी में आए तो हमारे जिंदगी का वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है उससे एक मिनट दूर रहना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं था एज ए सेफ प्लेस को बात करते थे तो लगता था या तो अपनी मम्मा के पास हो या मेरे पास हो तीसरा कोई ऐसा पर्सन नहीं मिलता था जहाँ लगे कि वो सेफ हो सके फिर एक समय आया जब उसको स्कूल जाना तो बड़ा डर सा लगा कि कैसे उसको अपने आप से दूर करें वो 2 घंटा भी वो हमारे स्कूल रहे तो कैसे तो वो दिन याद है जब पहली बार बनाया स्कूल में और हम लोग जब स्कूल आए उसको छोड़ने को तो उसको छोड़ने के बाद हम लोग स्कूल के गली के आसपास में घूमते रहते थे क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम लोग उससे दूर जा सके थोड़ी दूर पे वो गेट के पास आकर फिर से देखा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना ठीक है तो ये सिलसिला चलता है बट जब हम लोग कुछ दिन के बिना फिर हमारा भरोसा बढ़ता चला ड्यू टू द टीचर्स द स्टाफ मेंबर्स स्पेशली रेखा मैम नंदा मैम चावकरी मैम इनका प्यार इतना मिला कि हम लोग को ये फील नहीं हुआ कि हमसे दूर भी है और किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो और आज भी मनाया तो इसको फीवर दे रहा हम लोग सोचे कि वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे बट उससे जब पूछा तो मैम की बोली कि आपको भी दिया हम लोग वो मेडिसिन लेकर आई है और परफॉर्म कर रही है इसका डेडिकेशन देखकर भी मुझे बहुत फील हो रहा है कि इस डेडिकेशन के जरिए भी मम्मा मैं मूवी डाल तो ये सब प्यार है टीचर्स का उसके पेरेंट्स का इससे कारण ये है और आई वांट टू विश सेंडर कि जैसा ये यहाँ से परफॉर्म करते आए हैं बहुत बेटर फ्यूचर में परफॉर्म करते रहे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हम लोग सोचते हैं कि ये स्कूल जो है ये बच्चे को ग्रो करने का जगह है बट मेरा जो पर्सनल फीलिंग ये रहा कि ये जो प्ले स्कूल जिस तरह का है ये स्टूडेंट बच्चे के साथ इसके पेरेंट्स भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बच्चे यहाँ से सीखते हैं कि हमें अकेला कैसे रहना है या अपने माँ बाप को छोड़ के एक अदर स्टेटस प्लेस पे कैसे रहना है और एक पेरेंट्स सीखते हैं कि अपने बच्चे को किसी दूसरी जगह को कैसे छोड़ सकते हैं क्योंकि लाइफ में आगे में बढ़ना है डेवलप करना है काफी ऊपर जाना है तो ऑब्वियसली बात है कि लोग छोड़ के थोड़ा आगे हर किसी को निकलना होगा लेकिन ये कॉन्फिडेंस एक पेरेंट्स के लिए कैसे आए इससे भी स्कूल का बहुत बड़ा होता है थैंक यू मैम कि आप लोग हम लोग का कॉन्फिडेंस होगा कि मम्मा पापा के आंचल के अलावा कोई ऐसा जगह है जहाँ बच्चा अपने आप को इतना कंफर्टेबल फील कर सकता है थैंक यू सर I have ears but cannot hear. What am I? सेंचुरी है Place known for sunless beaches, vibrant markets, and of course, its lively and captivating dance forms. Goa, with its unique blend of Indian and Portuguese influence, is a land full of rhythm and celebration. And now,
what better way to explore Goa's soul than through its vibrant Konkani dance? Goa's Konkani culture, rich with traditions, tells the story of its people through dance, music, and celebration. The Konkani community, which forms the heart of Goa, has a dance form that's truly one of a kind. It is an expression of their rich heritage, their festive spirit, and their love for life. What makes Konkani dances truly special is how they seamlessly blend religions, cultures, and agricultural stories, with each dance telling a unique tale of Goan life. Through these dance forms, we experience not just the folk traditions, but also the deep-rooted spiritual and communal bonds that makes Goa culture so vibrant and welcoming. So sit back, relax, and let the energy and grace of Konkani dance transport you to the festive streets of Goa. Enjoy the performance and let's celebrate the incredible culture of Goa. The participants are Advika Chandyal, Prakya Sharma, Anya Dubey, Krishna, Bhavya Ishin, Ansh Ranjan, Kianji, Anshuman, Atal Shaurya, and Vedant Shaurya. दरिया किनारे एक बंगलो गोपोरी जई जो जई दरिया किनारे एक बंगलो गोपोरी जई जो जई जय जो जय अरे जाएगी कहाँ ये पोरी अरे जाएगी कहाँ तेरे पीछे ये पोरा आई जो आई दरिया किनारे एक बंगलो गोपोरी जई जो जई दरिया किनारे एक बंगलो गोपोरी जई जो जई क्या हाँ। दूर से ही ललचाऊंगा क्या मैं तुझको पुकार करके मैं जाके खिड़की में बैठूंगी सोला सिंगार करके और दूर से ही ललचाऊंगा क्या मैं तुझको पुकार करके रहूंगी न तेरे साथ अरे छोड़ मेरा हाथ जिया में है कोई बात सबा पे है कोई बात कैसी तू बनती है री आई हाई दरिया किनारे एक बंगलो गोपोरी जई जो जई जई जो जई अरे जाएगी कहाँ ये पोरी अरे जाएगी कहाँ तेरे पीछे ये पोरा आई जो आई दरिया किनारे एक बंगलो गोपोरी जई जो जई Vanya to kindly come up and share her experience. Thank you, ma'am, for giving me such an opportunity to speak. At this, I am Vanya's mom. At this age, school is not just about academics, but it is about the overall development of the child and also about exploring the world, socializing, and making new friends. We are here to witness the annual program of Shalom Legends and the hard work of our little children and all the teachers who have been working for months to make this day so special and such a success. It is just a year ago when Vanya started coming to Shalom Legends. At the beginning,
इसको नहीं भेज आदमी का इसको नहीं सुनिए ना And one thing also I like very much about this school is that in Shillong practice they celebrate each and every festival which is celebrated all over India, whether it is the 10th caste. And because of this, the children get to know the various types of festivals that are celebrated and the importance of the festivals. And with the guidance of government and experienced teachers and